Hello. Yes. Yes. Hello. Yeah, hello, ma'am. Hello, sir. Okay. Yes. Good morning, Ishwarya. Good morning. So let's start today's session. Sure. Okay. In today's session, Ashwarya, we are going to learn about the mathematical and the statistical formulas. As I already told you, in Excel, we have a lots of formula and which we Mm. need in future to apply in multiple tools, even to apply in building reports or in a dashboard. So that's why, first of all, we are learning here the formulas. And after covering the formulas, we will apply all these formulas in the multiple tools of Excel in building the dashboards and reports and so on. So here I'm talking about the mathematical and statistical functions. Okay, right now, Aishwarya, we have a database here, a sample database in which employees' name, their codes, and respective sales of each and every month are given, right? Yeah. So right now I need to here calculate their total sales value. So first of all, Okay. you guide me. Generally, how do you calculate the total? We will use the sum function. Yes, yeah, it is definitely. We will use a sum function here. So in Excel, we do start our formula with equal sign. Okay. Otherwise, Yeah. you can also start your formula with any operator, either minus, either plus. Okay. Um, how would you So start with either minus or yes, plus and still? equal. So here I'm going to start with equal. Now I will type here the function name sum. Now open the bracket. And when you open the bracket, the syntax of the formula is showing here. And this syntax will guide us what to do next. Now, Excel is asking to please select the number which you want to add. And it may be number one, it may be number two, dot, 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 it means etc. Okay. So you may select the maximum number you want. So first of all, here we are using the sum function here. The benefit of using this function is get it, you don't need to select each and every number one by one. You can select the whole range together from the cell E2 to J2. The whole range, you can select it once. Okay. Now close the bracket. So we have a total here 28,89,700. Now you will copy your formula to the remaining cells. And there are multiple methods to copy your formula. The first one is to drag down. You will place your cursor at the bottom right corner of the cell and keep holding the left button of the mouse and keep dragging till the last employee. This is the first method. The second one, you can simply place your pointer at the right bottom corner and press double click, means the left click of the mouse. Instant, you have to press double click quickly. Yeah. This is the second method. And the third method is your shortcut. And for shortcut, you will select all the blank cells here along with the first one cell in which you have applied the formula. And we'll press the shortcut here, Control D. Control D is for drag down. Okay. And if you want to copy your formula from left to right column, then you will use the shortcut here, Control R. Okay. I will share the notes, shortcuts with you. Okay. Okay. Thank you, ma'am. And for this purpose, Ashwarya, we have a shortcut too. And the shortcut is alt equals to. The shortcut is of auto sum. So what will I do here? I will simply place my cursor here and press the shortcut alt equals to. And the Um, magic is here, the function name has already been applied automatically and even the cells has also selected automatically.
Right. Okay. Okay, now moving to the next function, and the next function we have a average. If you want to get the average of the selected numbers. So here I want to calculate the average sales here. Right now, Aishwarya, please forget that there is a function with the name average. Okay. So if we have if we do not have any function name with the average, then how we will calculate here average? Um, we'll type something like equal to Right? total divided by Correct. The uh, number of sales, the or you number of can say that the number of months. months. Right. So there are 6 months. We can simply divide it by 6. Yeah. So here we have average. Right. For this purpose, you must have a total marks here, right? Yes. Otherwise, we have a function here, average. Now, please tell me, Ashwara, do I need to write the average AVERAGE completely? There seems to be a lot of different functions too. So, See, mm, when you type the simple starting key characters of any formula here, so it show the list of the formula started from A, right. right? From here, you can place your pointer on average and please press the tab key. Okay. Yes, tab key. So you don't know, need to type here AVERAGE complete. Okay. Now select the numbers which you want to get the average. So here I will select the sales value from April to September. Okay. Mm, Now close the bracket and we have the average. okay. And then drag down. Yes. And now from here, I want to get the highest sale of each and every month. Like Mm, what is the highest sale of April month? What is the lowest sale of April month? Or you can say that for each and every month, I want to find out here highest sale. So to get the highest sale here, we have a formula with the name max. Max here stands for maximum. Okay. So okay. from the selected range, if you want to get the highest number, then simply apply the formula of max equals to max, turn on the bracket, and here we have to select the numbers. So I will select here the sales value of April month. Now close the bracket and press enter. Okay. Formula copy from left to right. Okay. And if you Okay. want to use a shortcut here, Aishwarya, then simply select the cells and press the shortcut here, Control R. Uh, Control R, or was it Alt plus equal to? No, no, no. Alt plus equals to is the only shortcut of auto sum. Okay. 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 It's not about the shortcut of max. It's not about the shortcut of average. Not any other formulas. It's only Okay. for the sum. Sorry, my bad. I thought it was the track down for rows. No, no, no. Alt equals to is a shortcut of auto sum. Okay. Because Excel is aware कि each and every user भी जो भी Excel use कर रहा है, at least he or she need a formula of sum because each and every person wants to get the total of any numbers. That's why it जो shortcut develop हुआ है, it's only for the sum function. Okay. Which any other formula depends upon your requirement. Now I want to get the lowest sale value for each and every month. And for lowest sales value, we have a function with the name min. And min here stands for minimum. Okay. So equals to min, turn on bracket, then in numbers you have to select the sales value of April month.
Now close the bracket and press enter key. So we have a lowest sale value of April month is 2,07,900, right, Ashwarya? Right. And if I need to copy this formula to the right column, then what I do here, I will select all these blank cells and simply press the shortcut of Control R. Yeah. Now, Ashwarya, there is a turning point here that I want to get the second highest value. If the first Um, highest sale is 7,98,200, then what would be the second highest sale? yeah. अब ऐसा I, तो नहीं है इस पर्पस के लिए ऐश्वर्या कि आप अप्रैल सेल्स मंथ को मैनुअली लुकअप करोगे कि व्हाट इज द सेकंड हाईएस्ट सेल देयर no, no, no. because right now we have a short database of 20 rows, but what about the last database where we can face 1,000 rows? Right. That's why here we are learning the formulas. Okay. So we have a formula here with large and small. In large function is used to get the n number of highest value. N number of highest means you can get the first highest, you can get the second highest, you can get the third highest, and so on, equals to large. तो इन फॉर्मूलाज को आपको ऐश्वर्या याद करना होगा। याद करने का मतलब ये नहीं आपको इनको रटना है। Mm-hmm. यू सिंपली फॉलो द असाइनमेंट्स गिवन बाय मी। आप जितने Sure. ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम असाइनमेंट सॉल्व करोगे then you will definitely grab all these formulas. Okay. So we have a large function here, and in large function, what is the argument here? There are two arguments, Aishwarya. The first one is array and second one is key. Am I right? Yeah. And in array, we select the sales value of April month. Array means the range in which you are looking for the highest value. So Right. in array, I will select here the sales value of April month. Now put comma here. Do follow the syntax. And now in key, I will type here 2 to get the second highest value. For the third highest, you may write down 3, fourth highest, write down 4, and so on. Nice. Now close the bracket and press enter. So after 7,98,200, we have the second highest 7,94,600. So जनरली क्या होता है कि कंपनीज में हम लोग नोटिस बोर्ड पे या क्लिप बोर्ड पे ये डिस्प्ले करते हैं व्हाट इज आवर हाईएस्ट सेल व्हाट इज आवर लोएस्ट सेल. So Mm-hmm. for this purpose, you can simply use the formula. Now pressing the shortcut Control R, Okay. and for the second lowest value here, I will use here the formula of small. Okay. In array, I will select here the April sales. yes, put comma, and in key, write down 2. Okay. Now we have a short database of this one. Okay, Shwara, see, look at here. Here the employees' names are given, their total sales are given. Now you need to rank each and every employee on the basis of their sale. Who is number one, who is number two, who is number three, etc. So generally what you do if you are allotting a rank, Um, I think there might be a function with the name of rank. yeah, there is a function, but do try to find an another way. Like for example, if there is no function here, what we do generally, I asked Um, the same question to the one of my student. You know what he told me? Ma'am, we can sort the database. oh, yes.
You mean sorting means please arrange your database in ascending to descending or descending to ascending order, right? Hmm. Then I ask one more question to him. What about if there is a duplicacy in the value? Like for example, अगर मैंने यहाँ पर इन total values को ऐश्वर्या arrange कर दिया from ascending to descending order, yeah, descending to ascending order. So we have a sort option here. Hmm. There is an icon of sort Yeah. in the editing group. Then sort smallest to largest or largest to smallest. Here I'm applying the option largest to smallest. Okay, continue with the current selection and sort. So अब मैंने यहाँ पर जो है values को sort कर दिया है. Or if you want to sort the database overall, means along with the employees, you can simply select the whole database. Right, Okay. Aishwarya? Then again click on the sort. Then click on the custom sort. And in Hmm. custom sort, you have to sort the column on which basis on you are sorting your database. So here I am selecting the option of total. Now please define the order from largest to smallest or largest smallest to largest. Here I am applying largest to smallest. Okay. अब ठीक है यहाँ पर ऐश्वर्या कि यहाँ पर डेटाबेस जो है वो मेरा a little bit there is an error. Hmm. Um, It's not sorting the way which we are looking for. yes. Um, Just a moment. Why is it not working? yeah, even I don't understand. Usually it should. Okay, okay, okay. Wait, let me check here. I can understand here. The reason being that Ashwara, the value which that I have copied from the original database, actually there is a formula applied there. Oh, yes. That's why the reference of the cell is getting changed each and every time. So what I'm going to do here, I will piece the values. Right click, piece special, and click on the values. Oh, okay, okay. Now it's perfectly fine. And now we can sort the database. Sorting on the basis of total, largest to smallest. Done. अब मैंने यहाँ पर ऐश्वर्या डेटा को सॉर्ट कर दिया है. Then you can simply allot the rank. You can copy the serial number. अब एक मेथड ये होता है रैंक डिफाइन करने का. बट ये मेथड कहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा इफ यू हैव अ डुप्लीकेट वैल्यू. अगर मैंने कहा आपको ऐश्वर्या कि सुमित की भी सेम सेल्स वैल्यू है, इट्स 36,25900. नाउ लुक एट हियर. अमित की भी सेल्स वैल्यू सेम है, सुमित की भी सेल्स वैल्यू सेम है, बट हाउ कैन देयर रैंक बी डिफरेंट? They must be at the same position. Am I right? Right. अब इस सिचुएशन में क्या आपको लगता है ये सॉर्टिंग मेथड सक्सेसफुल होगा? Um, No. Otherwise I have to edit their rank accordingly. right, right. That's why we have a formula here. And to apply your formula, we don't need a sorting here. Okay, remember one thing here, that you don't need a sorting here. So what can I do here? I can simply select the original sales value from here, copy, so now applying the formula of rank equals to rank, rank, turn on the bracket. So the first argument is here number, means आप
किसकी रैंक फाइंड आउट कर रहे हैं ऐश्वर्या? चेतन की? अब Right. चेतन के नाम से तुम उसकी रैंक नहीं अलॉट कर सकते ना कि यस चेतन का नाम बड़ा अच्छा लग रहा है सो ही गॉट फर्स्ट रैंक। नो, हमारे लिए मैटर करती है चेतन की सेल वैल्यू। सो नंबर में हम क्या सेलेक्ट करेंगे? चेतन की टोटल सेल एंड इट्स 28,89,700, राइट? Right. Now put comma here. Second argument is Reference. yes. Reference means अब मान लो कि ऐश्वर्या आपकी क्लास में देर आर 10 स्टूडेंट्स, आपने 10 का एग्जाम्स कंडक्ट किया। अब नाउ you have a marks of each and every students and you need to define their rank। तो किसी भी इंडिविजुअल स्टूडेंट के मार्क्स के बेसिस पर कभी भी आप उसकी रैंक डिफाइन नहीं कर सकते इफ यू डोंट हैव अ मार्क्स ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, बिकॉज देयर मस्ट बी अ कंपैरिजन। Okay. जब तक आपके पास सभी एम्प्लॉयज की टोटल सेल वैल्यू नहीं होगी यू कांट मेक कंपैरिजन दैट हु इज ऑन फर्स्ट रैंक, हु इज ऑन सेकंड रैंक। तो Mhm. रेफरेंस में हम यहाँ पर ऐश्वर्य सभी एम्प्लॉयज की टोटल सेल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। Okay. एंड डोंट फॉरगेट दैट देयर इज अ रेफरेंस फ्रॉम R2 टू R21। और जब मैं फॉर्मूला ऊपर से नीचे कॉपी करूंगी देन रेफरेंस गेट चेंज। अभी तो रेफरेंस यहाँ ये R2 टू R21 पिक कर रहा है बट फॉर्मूला Mm. कॉपी करने का इट विल टेक द रेफरेंस फ्रॉम R3 टू R22, R4 टू R23, R5 टू R25, 26। तो रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। वी नीड टू लॉक दिस रेफरेंस एंड टू लॉक दिस रेफरेंस व्हाट विल वी डू हियर? Bracket or star. डॉलर साइन, you know? Or into. Yes, I will press here function key F4 to get this cell reference locked. Okay. Now put comma here. अब Excel आपसे पूछ रहा है in what order I need to define their rank. So order में हम यहाँ पर क्या select करेंगे? Descending order. तभी क्या होगा ऐश्वर्य? जिसकी हाईएस्ट सेल होगी वो फर्स्ट रैंक पर होगा, उससे कम वाली सेल पर सेकंड रैंक, देन उससे कम थर्ड रैंक। So here I'm selecting the 0 for descending order. Now close the bracket and enter. So फर्स्ट रैंक पे यहाँ पर कौन है ऐश्वर्य? John. करेक्ट। और अगर यहाँ पर मैं डेटा में डुप्लीकेसी करूं लाइक रचना एंड अमन सॉरी, they both have a common sale value, so in that scenario both get the position of Second rank. right। अब Okay. इसमें अगर आपको प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए ऐश्वर्या ये दिखाना है अपने एम्प्लॉयर को दैट कौन फर्स्ट रैंक पर है, कौन सेकंड पर है, देन कौन थर्ड पर है, देन यू कैन सिंपली सॉर्ट योर डेटाबेस ऑन द बेसिस ऑफ रैंक। Right. Okay, not on the basis of a total sale value, because in total sale value we can have a duplicacy. Okay. So if there is any confusion about the rank formula you can simply ask. If you change the, if you apply the sorting on the rank, let's say if you want to Mhm. present it to your boss or whoever, and so we get it in descending order, but would the name and total, the adjacent name and total also Yes, move according to? accordingly the name and total will also adjust with the rank, otherwise there is no meaning. Yeah, yeah. So we can select the database, click on the sort icon, and from here select the option of rank, largest to smallest, okay, or smallest to largest. Okay. Got Now just a second, just a second. Sure, sure.
Okay, Shwarya. Now we have a function belongs to the category of count family. There is a Oh, count, there is a count blank, there is a counter, there is a count if. Means if you count the number of the cells, then do follow the formulas of count categories. Now, Shwarya, please look at the database here. And here database is containing the employee's name and their respective commission. Right, Ishwara? mm, Now we have a one question for you that please count the number of employees who did not get commission. okay. So ऐश्वर्या आपको यहाँ ये बताना है कि इस डेटाबेस में से कितने एम्प्लॉयज हैं जिन्हें कमीशन नहीं मिला है. सो प्लीज टेल मी कि यहाँ जिन एम्प्लॉयज को कमीशन नहीं मिला है उनकी आइडेंटिटी क्या है. Um, Null values in the commission. यस देयर इज अ ब्लैंक सेल. Okay. इनकी आइडेंटिटी ये है कि उन सेल्स में कोई वैल्यू गिवन नहीं है. सो अगर हम यहाँ से ब्लैंक सेल्स काउंट कर लें देन वी हैव आंसर. Yes. इससे हमें ये पता लग जाएगा कि ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जिन्हें कमीशन नहीं मिला है. So we can use a formula here equals to count blank. Oh, okay. So in range, you can simply select the commission of each and every employee. Please select the whole range. Now turn off the bracket. So we have 7 blank cells here. Or you can say that there are 7 employees here who did not get their commission. Okay. And in reverse, if I ask you, please calculate the number of employees who got commission. So in reverse, I will look for the cell that containing numbers. Am I right here? Mm-hmm. Because अगर यहाँ ऐश्वर्या मैं यहाँ पर वैल्यू 100 भी लिख दूँ, it will also count as a कि उसको कमीशन मिला चाहे 100 रुपए ही कहीं क्यों ना मिला हो. Mm-hmm. यहाँ Yes. मैं 1 भी लिख दूँ तो भी माना जाएगा उसे कमीशन मिला है 1 रुपए का ही क्यों ना मिला हो. So here we can what we can do, हम यहाँ पर उन सेल्स को काउंट कर सकते हैं जिनमें नंबर्स गिवन हो. And for this purpose we have a formula here count. Please read the description here that it count the number of cells in a range that contain numbers. लेकिन Mm-hmm. फॉर्मूलाज को अगेन आई एम सेइंग आप इनका यूज देख रहे हो लेकिन कौन सा फॉर्मूला किस डेटाबेस पे वर्क करेगा ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर डेटाबेस. आपको डेटाबेस को पहले लुकअप करना होगा कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला सूट करता है. अभी मैं आपको यहाँ पर एक चेंज भी करके दिखाऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अप्लाइंग फॉर्मूला हियर. अब मैं Mm-hmm. यहाँ पर होल कमीशन रेंज सेलेक्ट कर लूंगी. नाउ क्लोज द ब्रैकेट हियर. सो वी हैव अ 12 12 employees here. Okay. आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So it is counting the cells that contain numbers. Yes. Now Ashwarya, count the number of employees who got commission above 50,000. अब इस डेटाबेस में से कितने एम्प्लॉयज हैं जिन्हें 50,000 से अबव का कमीशन मिला है. तो अब मैंने यहाँ पर अगेन आपको ऐश्वर्या सेल्स काउंट करने के लिए कहा है बट देर इज अ कंडीशन. तो जब भी आपको कंडीशन को ध्यान में रखते हुए सेल्स को काउंट करना हो देन वी हैव अ फॉर्मूला हियर काउंट इफ. Right. लिखा है ना काउंट Mm. द सेल्स बेस्ड ऑन द कंडीशन और क्राइटेरिया. Okay. सो इक्वल्स टू count if turn on bracket. In range I will select here the commission of all employees and put comma here
Now we need to define here criteria, what we want to count here. तो जब भी आप क्राइटेरिया एश्योरेंस में डिफाइन करोगे, प्लीज डू डिफाइन क्राइटेरिया इन इन्वर्टेड कॉमर्स. Okay. सो हमें यहाँ पर कौन सी सेल्स काउंट करने हैं जिनमें दी गई वैल्यू 50,000 से ऊपर हो. तो Yes. ऊपर के लिए व्हाट विल टाइप हियर, ग्रेटर देन 50,000. Okay. देन inverted comma close, then bracket close, and we have a 4 employees here. Okay. Now total number of employees. अब ऐश्वर्या इसमें हमारे पास टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं. Um, 20. The first option is here. You can simply add these two numbers. जिन्हें कमीशन मिला है, जिन्हें कमीशन नहीं मिला. इट मीन्स टोटल हियर 19, राइट. Okay. 90. अदरवाइज अगर यही क्वेश्चन मैंने आपसे बिगनिंग में पूछा होता, तो आपका जर्नल मेथड क्या होता काउंट करने का. यू कैन काउंट देयर नेम्स. मैम 1 2 3 4 5 6, आप ऐसे काउंट करते ना. Mm-hmm. तो इट मीन्स दैट यू आर काउंटिंग द सेल्स दैट कंटेनिंग टेक्स्ट हियर. Yeah. अभी तक हम वो फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं यहाँ पर नंबर्स मौजूद थे या ब्लैंक सेल्स से. नाउ वी हैव अ फॉर्मूला हियर काउंटा, और यू कैन प्रोनाउंस इट काउंटे. तो ये वो सेल्स काउंट करता है जो ब्लैंक नहीं होते. इट मीन्स चाहे उन सेल्स में कोई नंबर हो, चाहे टेक्स्ट हो, या कोई भी करेक्टर या सिंबल हो. Then we use a formula here counte, or you can pronounce it counta, Okay. equals to counta, turn on bracket, values. You can simply select the name of employees. So we have 19 employees here. अब अगर इस डेटाबेस में आप इस एम्प्लॉय टाइटल को भी सिलेक्ट कर लेते ना, तो ये भी एम्प्लॉयज में काउंट हो जाता. सो Oh, सिलेक्शन okay. यहाँ मैटर करती है. So Shweta, now what I'm doing here, I'm going to edit the database and removing all these formulas. अब ईश्वरीय जिन एम्प्लॉयज को कमीशन नहीं मिला है, क्या आइडेंटिटी है उनकी. उनका कमीशन 0 है. राइट. तो अब अगर इस डेटाबेस से मैं आपसे कहूं कि प्लीज फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिन्हें कमीशन नहीं मिला है, तो आपको लगता है कि यहाँ पर काउंट ब्लैंक फंक्शन यूजफुल होता. नहीं. नो, बिकॉज काउंट ब्लैंक फंक्शन काउंट द ब्लैंक सेल्स ओनली. Yeah. तो अब इस सिचुएशन में हमें यहाँ पर वो सेल्स काउंट करने होंगे जिसमें जीरो और नल वैल्यू गिवन है. सो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला हियर. Count Count if. In range, you will select the database. and take criteria equals to 0. Inverted. Inverted Equals to. comma 0. Okay, just 0. According to the database, आपको आपकी स्ट्रैटेजी और अपना फॉर्मूला चेंज करना है. और अब अगर मैं यहाँ पर पूछूं ऐसे कितने एम्प्लॉयज है जिन्हें कमीशन मिला है, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या यहाँ पर ये काउंट फंक्शन वर्क करेगा. बिकॉज काउंट फंक्शन तो यहाँ पर ऐश्वर्य उन सेल्स को भी काउंट कर लेगा जिसमें जीरो है, बिकॉज जीरो इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ नंबर. Mm. ये देखो क्या डिस्प्ले करेगा, 19. Right, right. In that situation, again you have to use here countif. In range, you will select the numbers here, put comma, and what will be your criteria. अब जिन्हें कमीशन मिला है उनकी आइडेंटिटी क्या है, that greater than 0. So there are 12 employees. Okay.
Hmm. Next, next database. So we have a date-wise stock items sales here. किस डेट पर किस आइटम की कितनी सेल हुई है वो इस डेटाबेस में गिवन है. अब अगर यहाँ मेरा क्वेश्चन होता कि ऐश्वर्या व्हाट इज द टोटल सेल हियर देन यू कैन सिंपली अप्लाई द फंक्शन ऑफ सम, Hmm. राइट? और यू Yes. कैन यूज द शॉर्टकट हियर ऑल्ट इक्वल्स टू. Okay. Yeah. Got it. So the total sale is here 4,06,000. But if I ask you to please get the total sale of respective product, I mean I'm asking for the total sale of hard disk here. Okay. तो अगर अब आपको यहाँ पर क्राइटेरिया बेसिस पर टोटल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, then you have a formula here sum if function. Oh. It is used to add number based on a specific condition. Okay. Okay. Equals to sum if in range में आप select करोगे ऐश्वर्या the basis on which you are going to find out the total values. तो अगर हमें यहाँ पर टोटल सेल वैल्यू निकाल लिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक आइटम्स नेम, राइट? तो अब Hmm. रेंज में सेलेक्ट करोगे ऑल स्टॉक आइटम्स. पुट कॉमा हियर. नाउ इट इज आस्किंग क्राइटेरिया कि इन सभी टोटल प्रोडक्ट्स में से आपको किस प्रोडक्ट की टोटल सेल फाइंड आउट करनी है. सो क्राइटेरिया मीन्स योर कंडीशन and in criteria I can simply select here hard disk. Okay. Put comma. Now it is asking sum range कि आपको किस रेंज का सम करना है, आपको किस रेंज की वैल्यूज का सम करना है. तो इन सम रेंज आई विल सिलेक्ट हियर द सेल्स वैल्यू. Close the bracket and it's 1,12,000. Okay. ऐश्वर्या यहाँ तो मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर रखी है. उसका बेनिफिट ये है कि इफ यू आर लुकिंग फॉर द टोटल सेल वैल्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट देन यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम हियर. लैपटॉप की टोटल सेल 91,000, माउस 98,000, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क. Okay. And you know how to create the drop down list here. Don't have. Okay, look at here. Please select the cell in which you want to create the drop down list. Then click on data tab, and data tab we have a tool of data validation. In future we will learn about brief. We will learn brief about this tool. But right now here I am only applying one of the option here, the list. Okay, the list. Okay. And in list we have to define the source. कि list में आपको कौन कौन सी values include करनी है. So we have a laptop, keyboard. जब इन फ्यूचर में अब मैं आपको ये टॉपिक डिटेल में बताऊंगी देन आई विल आल्सो क्लियर कि यहाँ पर आपको सोर्स में ही वैल्यू टाइप करने की भी नीड नहीं पड़ेगी. यू कैन सिंपली सेलेक्ट. बट अभी मैं यहाँ सेलेक्ट क्यों नहीं कर रही हूँ, द रीजन बिंग दैट क्योंकि डेटा में डुप्लीकेसी है तो वैल्यूज मेरी रिपीट हो जाएंगी ईश्वर. Okay. इसलिए मुझे मैनुअली टाइप करना पड़ रहा है. बट फ्यूचर में मैं जब इस टूल को ब्रीफ में बताऊंगी तब ये भी मेथड बताऊंगी कि अगर डेटा में डुप्लीकेसी है तो वहां से हम डेटा का सोर्स कैसे फाइंड आउट करें, यूनिक डेटा का सोर्स. Okay. तो ओके, जब आप ओके करोगे देन यू हैव अ ड्रॉप डाउन लिस्ट हियर. ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा. रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत यूजफुल होता है. इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर मुझे किसी और प्रोडक्ट की टोटल से फाइंड आउट करनी है देन मुझे टाइप करने की नीड नहीं है. आई कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. Okay. Now moving to the last category, and the last category would be here round. Ashwarya, we have a formula INT.
int stands here integer. अगर आपको डेसिमल डिजिट से डेसिमल्स रिमूव करने हैं तो आप यूज करो फॉर्मूला यहाँ पर int का। और अगर आपको किसी भी नंबर को अप टू स्पेसिफिक डेसिमल डिजिट राउंड करना है तो आप यूज करो फॉर्मूला राउंड का। Okay, so here we have a respective items and their respective sales. Okay. अब मुझे क्या करना है, मेरे एम्प्लॉय ने मुझे कहा ऐश्वर्या कि मैम प्लीज रिमूव दिस डेसिमल डिजिट्स एंड कीप द ओरिजिनल वैल्यूज। तो अब अगर डेसिमल डिजिट्स को मुझे रिमूव करना है और नंबर को कंप्लीटली राउंड करना है, सो आई कैन सिंपली अप्लाई द फंक्शन हियर int। int मींस इंटीजर नंबर। तो Yes. मैं यहाँ नंबर सेलेक्ट करूंगी, देन क्लोज द ब्रैकेट। Okay. तो डेसिमल डिजिट्स यहाँ रिमूव हो गई है। बट इफ यू से मैम यहाँ डेसिमल के बाद की जो जीरो जीरो भी शोर है, प्लीज रिमूव इट टू। देन वी हैव एन आइकन हियर फ्रॉम होम टैब in number group. This is for increased decimal, this is for decreased decimal. Do Okay. apply decreased decimal. Yes. Okay. एंड जनरली जब हम राउंड फंक्शन अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमें कहा जाता है कि अगर डेसिमल की बात फिगर 50 पैसा से ऊपर हो देन प्लीज ऐड वन नंबर एक्स्ट्रा, राइट। यही होता था, यही मैथोडोलॉजी हम स्कूल में यूज करते आए हैं टू राउंड एनी नंबर। Yes. Yes. तो अगर उस मैथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग इन नंबर्स को राउंड करना हो देन यूज अ फंक्शन हियर राउंड नंबर, select your sales value, comma. So now Excel is asking up to कितने decimal digit आपको इस नंबर को राउंड करना है। If you say कि मैम प्लीज up to 2 decimal digits, then write down here 2. Then the number would become 85,001. हाँ, डेसिमल के बाद के नंबर शो क्यों नहीं हो रहे हैं? रीजन यहाँ पर यह है क्योंकि मैंने यहाँ पर डेसिमल डिजिट्स को रिड्यूस कर दिया था। Okay. Okay. अगर Yes. मैं इसको इंक्रीज कर दूं देन इट विल डिस्प्ले लाइक दिस। Okay. तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये अप टू द 2 decimal digits आपको शो होंगे। And if your employer asks you to place round this number up to a 0 decimal digit, then type here 0. 3 number completely round हो जाएंगे। Okay. So यहाँ पर 85,000 becomes 85,000. 85,001. The reason being that after decimal digit the figure is above 50 पैसा। और इसकी जगह अगर हमारे पास int function था then it was working like we are rounding a complete number but up to the downward। यहाँ पर ये किसी भी नंबर को अपवर्ड राउंड नहीं कर रहा है, Yeah. इट इज कीपिंग द सेम नंबर। अब आप देखो कि यहाँ पर 60,452.36 पैसा, अगर इसको हम राउंड कर रहे हैं तो इट इज सेम। द रीजन डेसिमल के बाद 50 पैसा से ऊपर डिजिट नहीं है। Yes. Yes. बट द 7,50,000 हियर इट्स बिकमिंग 7,50,001 बिकॉज डेसिमल के बाद फिगर 89 पैसा है। Yes. Okay. अब ना ऐश्वर्या, मैंने आपसे कहा कि प्लीज राउंड दिस नंबर अप टू द मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स। आप इन नंबर्स को 100 की मल्टीपल में राउंड कर दो। आपने एटीएम से पैसे विड्रॉ किए हैं ऐश्वर्या? Oh, okay. करें? आई एम आस्किंग यस और नो। Yes. Yes. ओके, क्या आपने कभी 133 रुपीज विड्रॉ करे? नहीं. रीजन इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप 133 की कमांड दोगे एटीएम मशीन को देन इट विल शो द मैसेज हियर प्लीज एंटर द नंबर इन मल्टीपल्स ऑफ 100। तो कभी भी अगर हमें किसी नंबर को किसी मल्टीपल्स में राउंड करना हो देन यूज अ फंक्शन हियर एम राउंड।
number and in multiples, तो आंसर में वो फिगर आएगी जो 100 से डिविजिबल हो। और इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा सेकेंड आइटम में, क्योंकि बाकी सारे ही 100 के मल्टीपल्स में है, राइट। Yes, yes. सी सेकेंड फिगर 68,452 इज बिकमिंग 68,500। अब आप कहोगे कि मैम ये यहाँ ये यूजफुल कहाँ होंगे। एट द टाइम ऑफ इनवॉइस मेकिंग, जब हम इनवॉइस जनरेट करते हैं ना, तो वहां पर फिगर डेसिमल्स में आ जाती है, और वहां अगर हमें नंबर को राउंड करना है तो आप वहां यूज करें फंक्शन। हम जब टेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं तो टेक्स्ट भी हमारा डेसिमल्स में आता है, वहां पर भी डिपार्टमेंट हमें नंबर को राउंड करने के लिए कहता है, देन यूज दिस फंक्शंस। Okay, And okay. it all up to you whether you want to round a number to the upward or to the downward. Where was the section where you mentioned that you need to round it to a divisible to a number divisible by 100? What was that part of the The, formula? that divisible by 100, like Mm-hmm. in ATM machines or in a income tax department. अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रूल है कि जब भी आप अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे, अगर वो डेसिमल डिजिट्स में आता है, प्लीज राउंड इन द मल्टीपल ऑफ 10। तो इट मींस अगर आपका टैक्स आ रहा होगा ईश्वर, लाइक फॉर एग्जांपल 9,833 रुपीज, तो अब अगर मैं इसको राउंड करूं 10 के मल्टीपल्स में, देन व्हाट आई नीड टू पे हियर, तो मुझे पे करना होगा गवर्नमेंट को 9830। एंड द कॉन्सेप्ट इज यूजिंग हियर कि अगेन अगर नंबर जो है वो 50 रुपीज से कम है, देन इट विल डाउनवर्ड द नंबर, वो डाउनवर्ड राउंडिंग करेगा। और 50 से अबव है तो ये अपवर्ड राउंडिंग करेगा। इट मींस अगर यहाँ पर नंबर होता 63, देन इट विल मेक द नंबर, Um, व्हाट डू यू थिंक। 60, या 60 ही रखेगा। और अगर यहाँ नंबर होता 66, 70. यस। Okay. और यही अगर आपको 100 के मल्टीपल्स में राउंड करने के लिए कहा जाए, देन द फिगर वुड बी Um, I नाउ mean, 98 9,866 is becoming 9,900 because it is divisible by 100। और अगर यहाँ पर फिगर होती 43, then it keeping the number 9,800 because वो 50 से below है। okay, okay. Now the last function of our today's session is product, and product function is used to get multiply on numbers. Means if I want to get these numbers multiply, like we have a TV, the 50 pieces TV, and the rate per piece is 36,000। तो अगर एक टीवी का रेट 36,000 है, then what is the total amount of 50 TV? One option is that you can simply use a calculation through operator, means equals to quantity multiplied by weight, right? Otherwise, you can use a function here, product. Quantity rate, Okay, okay? okay. So today we have covered the 16 formulas of Excel, and I will share the sample file, the assignments, the notes, and the shortcuts with you. To solve the assignments by tomorrow morning, and if you face any query, then you can simply share your screen। Sure, sure. मीन्स आप असाइनमेंट अपना रेडी रखना, जहां पर भी अगर आपको लगता है कि मैम ये मुझसे क्वेरी सॉल्व नहीं हो पाई, प्लीज डू मार्क विद एनी फॉन्ट कलर और डिफरेंट फॉन्ट कलर, और यू कैन मार्क विद द रेड फॉन्ट and share your screen with me, then I will guide you how to solve it। Understood, ma'am. Okay, fine। So could we end the session here, or is there any other query? No, ma'am. So far, it's good. Okay, fine, bye bye। Okay. Thank you, ma'am. Take care.